overall work, it's a good remarkable work, project, thesis, routine, and so on. These three specific aspects actually metaphysics and systemology and ecology. Overall aspect is covered in this particular phase. Yeah. But what about the concept of this is paper number third, philosophy and ethics. Philosophy and ethics. This is paper number third. Today we have discussed about paper number third. It is related to research and publication ethics. It is your paper. It is already on university website. The first topic is philosophy and ethics. And the subtopic is introduction of philosophy, definition, nature, scope and concept, then after branches. The second unit is ethics. And after all, it is a professional ethics. Ethics and after all, it is a professional ethics. So, we will discuss about the second sub-unit, ethics, and after all, first unit of overall complete. Last lecture. उसका किसी का निधि महत्व. So before we start this lecture, I think you are already aware about the concept of philosophy, the concept of theories. The concept of philosophy is related to about wisdom and so on, curiosity, and the second part is theories, metaphysics, epistemology, and exology. And the second subunit is ethics, which is referred to the professional aspect, which is referred to a professional guidelines. It is the professional ethics, 2 unit criteria wise. Today we will discuss about the concept of ethics, what is ethics, what is the meaning of ethics, structural of moral action, why ethics for work, relevance of ethics to ICT concept, benefits of studying the present scenario ethics, form of ethics, and the second way of moral philosophy and key areas of the moral philosophy. The concept of ethics is related to your positiveness. Yeah. Yes. Yeah. It's a slideshow, I think. I have no idea about this particular thing. It's an online lecture, basically. Yeah.
concept of ethics, meaning of ethics, structure of ethics, why ethics of work, relevance of ethics in ITC program, in ICT programs, benefits of ethics, forms of ethics, and the basic concept moral philosophy. We will discuss about these particular content. Actually, the ethics is based on your positive views. The first concept is your positive views is directly related to your ethics, and it is depends on your subject base, it is depends on your subject knowledge, it is depends on your overall scenario, it is based on professional ethics. The ethics, what is the difference between ethics and professional ethics? Ethics is a general concept. Yes, no, good, very good. It's a good literature. It is sufficient. But on the behalf of subject matter, on the behalf of subject knowledge, it is related to your professional aspect. This is the matter of values. It's a branches of philosophy. The first of thing, the ethics is directly related to your values. Your values, your way of style, your way of behavior, your presentation, your connection, your connectivity from first chapter to second chapter. It is related to professional aspect. It is called formatting aspect. The moral judgment, moral ethics, and values are related in our overall behavior. It is the part of study of principles, values, guidance on the behalf of human guidelines, human nature, on the behalf of human scenario, on the behalf of human behavior. What do you mean by human behavior? Human behavior depends on subject matter. You are a student of bioscience, you are a student of engineering, you are a student of education, you are a student of management, and so on. So it depends on your area, and your behavior is more important. The bioscience is related to a experimental aspect, management is related to a field work, education depends on classical aspect, field work, and pharmacy depends on some specific work in laboratory. That is called human behavior. That is called human behavior. And decision making is more important. At the time of final moment, what, why, and how. These are three questions more important for your life, for your career, for your thesis. At that time, yes and no, yes, this and zigzag position. This is the position of ethics. Ethics के time हम कैसे decisions लें? हमें क्या करना है? What about my thinking? No, not at all. What about overall scenario? That is a part of Ph.D. It is related to worldwide format. It is not related to our format. It is not related to my and individual aspect. It is related to worldwide form. That is the concept of decision making. Power is related to what to teach or how to say or what to say. What to say and how to say. It is related to teaching profession. It is the highest degree after that. क्या बोलना है, कैसे बोलना है? It depends on professional ethics. It depends on our overall personality behavior, which is covered from class nursery to master degree, which is covered from class nursery to PhD degree. This is ethics. क्या था पहले? Cut and paste, copy and write. IPR. What do you mean by copyrights? मैंने कुछ तैयार किया, उसने उसको कट किया, then print out दे दिया, find out करके print out निकाल के publish करा दिया. No, not at all. It is impossible. The main theme of this particular paper is what do you mean by your ethics? No, overall scenario ethics. तो मुझे भी अच्छा लगता है मैं करूंगा. No, not at all. वर्ल्डवाइड फॉर्म क्या कह रही है? In our Indian scenario, it is very difficult task. कॉपी पेस्ट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके रेफरेंस में यूजीसी ने ये पेपर लॉन्च करा है कि व्हाट डू एज ए रोल ऑफ गुड टीचर, एज ए रोल ऑफ इफेक्टिव टीचर, कि व्हाट डू यू मीन बाय योर थिंग, योर थॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड फॉर्म. दुनिया में क्या हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके थॉट को, आपके लेक्चर को, आपके लिटरेचर को, आपके राइटअप को
कोई कैसे कॉपी कर रहा है, उसको प्रोफेशनल एथिक्स से आएगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। इज इट पॉसिबल कि कोई आप राइटअप तैयार करना और कोई पब्लिश करा रहा है? यस, नो प्रॉब्लम। चैट जीपीटी तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, चैट जीपीटी, एआई बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। So first of all, in our elementary stage, the schooling is more important. Yes, no, good morning, good sir, and so on. Verbal aspect. Then after all, in this scenario, in this criteria, in this position, no, not at all. It is impossible. Why it is impossible? जब हमने छोटे क्लास में यस नो सीखा है, जब हमने वहां पर मॉरल सिक्स सीखे हैं, क्लास नर्सरी में यहाँ आते आते क्यों ये गैप एक बहुत बड़ा बढ़ जा रहा है? It's wastage of time? No. It is a wastage of time. Your elementary stage, वहां पर हम क्या सीखते हैं? Professional ethics. Thank you, yes, no, very good, may I come in, and so on. But after all, in this stage, overall questions. सब खत्म. On the behalf of this scenario, on the behalf of this important views, UGC will launch this particular प्रोफेशनल चीज। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन सिनेरियो नहीं मिला, कोटेशंस नहीं मिल रहे, रेफरेंसेस नहीं मिल रहे। आफ्टर ऑल ओवरऑल द सिनेरियो इज वेरी पोर। So we will launch this particular paper, the concept of ethics, research and publication. Research is from first chapter to last chapter in this paper, but publication ethics क्या है, मैटर क्या है, what do you mean by your theme, your thought, your recommendations, your views as per your last 5-year work. This paper is research and publication ethics from first chapter to last chapter. I think mostly 4 and 5 years आपका काम है। बट आफ्टर ऑल जब हार्ड वर्क में आ रहा है, इसको जो चेक किया जा रहा है, प्लेगरिज्म चेक किया जा रहा है, कॉपीराइट चेक किया जा रहा है, तो 70%, 90%, 3%, 4% कितना मिल रहा है, कहां से कॉपी किया है, तो कॉपी करने के बाद कोटेड किया है या नहीं किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओवरऑल अगर आपने रेफरेंसेस में बिब्लियोग्राफी में मेंशन किया, नो प्रॉब्लम है, मिस्टर एक्स सेज दिस कोटेशन, नो प्रॉब्लम है, बट दैट इज माय व्यूज, दैट इज माय थॉट, इट इज द बिग क्वेश्चन मार्क, इट इज द बिग क्वेश्चन मार्क फॉर योर एग्जाम। After all, this scenario is the professional ethics. Human behavior and decision making power is more important at the time of as per situation. As per situation. जो भी आप कर रहे हैं. It's a very specific meaning of ethics. Generally, it is depends on habits. In my previous today in my previous lecture, the habits, your behavior, your overall action, is a part of your scenario, your presentation. That is a part of habits, customs. That is a part of your habits. It's a very elementary stage definition. But after all, the second part is more important. The second point is more important. Ethics is also called moral philosophy. As per our thought, the philosophies relate to 3 specific findings. Number one, metaphysics. Number 2, epistemology. Number 3, exology. And the moral means it's a positive behavior. It is a positive behavior. Positive behavior with reference to metaphysics, positive aspect with reference to epistemology, and the greatness and the beauty of your work, that is moral physics. देखा नहीं होता PhD टॉपिक बाद में आएगा, नाम लिखेंगे डॉक्टर A.K. लोधी, PhD in एजुकेशन। एजुकेशन में PhD है, तो अब एजुकेशन में व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन में PhD? एक स्ट्रक्चर है
एक कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर थीम है, उसमें ये नजर आना चाहिए, मॉरल फिजिक्स, moral philosophy, metaphysics, epistemology, and axiology. This is a very important point. Ethics is also called moral philosophy. And the third is habits of society, या habits of behavior, या habits of your overall energy. आप कैसे काम करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. PhD हो जाएगी, yes and no, अरे it is okay, no, no, not at all. It's a very casual nature. It's my work, it's my topic, it's my thesis. I am responsible for that particular project. That is the concept of habits of society, habits of behavior, habits of performance. The second question is, what is ethics? The big question is, it is morally right and wrong? Yes, right and wrong. Professional and moral and specific ethics. These are professional ethics, ethics and moral philosophy. It is depends on my concept. It is depends on individual concept. It is wrong. The individual concept, individual behavior is directly related to our interest. But overall worldwide form is related to a worldwide interest. Your PhD is not your work. Your PhD is referred to overall society work, overall scenario, overall aspect. आपका अपना काम है, बट उसको प्रेजेंट तो आप करें. हम जहां बैठे हैं आज हम इस बात को कर रहे हैं, राइज कीजिए. ये गूगल, जूम, ये ऑनलाइन जिसने भी तैयार किया है, अगर वो उसको कॉपीराइट अपने पास रखते तो आदमी उसको यूज कर रहे होते. But the question is, your work is your work, no doubt. Your thesis is your thesis, is no doubt. But after all, the recommendation, the result is are reflect to worldwide. मेरे लिए PhD नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी थीसिस पे नहीं. निकल के क्या रहा है, उसका रिजल्ट और सोसाइटी को क्या मिल रहा है. कॉम्पिफिलिन, क्रोसिन, नंबर ऑफ टैबलेट फार्मेसी में क्या है जिसने बनाई थी, वो अपने भी यूज करेगा. On the behalf of human background, human behavior, सबके लिए. तो आपका जो वर्क आ रहा है, इससे जो आप बनाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल choose your topic, choose your overall scenario. It is very careful. बोलते नहीं टॉपिक चूज कीजिए, बहुत बहुत स्लोली फॉर्म. नंबर ऑफ रिव्यू कलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देखिए, नंबर ऑफ ऑपरेशन. नो प्रॉब्लम एट ऑल. You are already aware about the from nursery to master level. कितना हो रहा है नर्सरी टू मास्टर लेवल, कितना कितना ईयर हुआ. 17 ईयर्स में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मेरे ईयर क्या प्रॉब्लम है. फार्मेसी के स्टूडेंट भी मालूम होगा कि 17 साल लगा लिए जिसने अपनी फिजिक्स के बाद पीजी किया, यूजी किया, देन आफ्टर ऑल यहाँ है, उसके बाद उसने टॉपिक कैसे रिजल्ट होगा. कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पर. ये प्रॉब्लम, ये प्रोफेशनल एथिक्स है. सामने भी आइडेंटिफाई कर रहा है हमारी सोसाइटी इस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, ये कहाँ पर कोऑर्डिनेट हो रहा है. तो आज टीचर है जो हमने बताया उसको स्टार्ट कर दिया. हमारा वो प्रयास है और पूरा ए प्रयास है. प्रोफेसर ने, सर ने, टीचर ने, बिल्डर ने, एंड सो ऑन, ऐसा काफी लेवल पे काम करने से जब हम शुरू करें. आपका मेटा डिस्कवरी, आपका सिस्टम जब डिस्कवर, देन आफ्टर ऑल एक्सोलॉजी डेवलप हो गई. क्लासिक का आज जो बात हो रही है यहाँ पर, वो आपके अपने थीसिस के रेफरेंस में एक्सोलॉजी की बात हो रही है. वैल्यूएबल एस्पेक्ट, क्या आपकी थीसिस की ब्यूटी क्या है. ब्यूटी ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी, ब्यूटी ऑन द बिहाफ ऑफ योर कैरियर, ब्यूटी ऑन द बिहाफ ऑफ योर वर्क, ब्यूटी ऑन द बिहाफ ऑफ योर एस्पेक्ट. But it is depends on worldwide form. जुड़ा कौन सी है, काम हम कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आएगा क्या. इन अपनी थीसिस को लेके क्या करूँ, विज्ञान प्रॉब्लम क्या है. या तो सर ये ऑब्वियसली दैट इज नंबर ऑफ पॉलिटिक्स प्रॉब्लम. पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम अपने इंडियन प्रॉब्लम से
किस लेवल से अटैच करेंगे टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, वेरिएबल्स तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको इतना पता चला टॉपिक मिल जाएगा, बस स्ट्रेस नहीं कमेंट। बट जैसे ही आप मूव करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में मेजर प्रॉब्लम्स क्योंकि हमारा विजन क्लियर है, इट इज नॉट एवरीथिंग, नॉट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम आवर टॉपिक जब डिजाइन होगा तो प्रोफेशनल मैंने 12 साल लगाए, मैंने 13 साल की बात एजुकेशन में एजुकेशन काम में मेरा 14 years एजुकेशन में मैंने यूजी किया, पीजी किया, बीए किया, एमएड किया, इतना लंबे कोर्स के बाद फिर मैं आइडेंटिफाई करूँ कि टॉपिक क्या चूज करूंगा, स्कूल लेवल पे तुमने प्रॉब्लम देखी, फ्रॉम नर्सरी टू क्लास मास्टर लेवल तक आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम सर्च की है तो करिए बात चाहिए, क्यूरियोसिटी, लव ऑफ विजडम, क्योर कीजिए अपने आप को कि हमें यहाँ काम करना है, ये उसकी बात कर रहा है कि नंबर 1 क्वेश्चन कि क्या है, ये कंडक्ट पे क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि आप किस तरह से अपने थीसिस को कंडक्ट करना है। नंबर 2, इट्स ए गुड सेकंड क्वेश्चन ऑन बेस ऑफ वैल्यू एस्पेक्ट कि व्हाट मेक्स ए पर्सन समथिंग गुड एंड बैड। नंबर 3, हाउ टू ड्रा द करेक्ट कंक्लूजन अबाउट व्हाट वी डन एज पर द रिकमेंडेशंस, कि हम क्या करके ला रहे हैं। Ethics is related to your first day to your last day presentation. अभी आप बैठे हुए यहाँ पर स्कॉलर है, साइलेंटली सुन, बट आफ्टर ऑल फर्स्ट आईडीसी में आपको प्रेजेंटेशन लेना है। तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपको अपना कंक्लूजन करना है एज पर योर इथिक्स। क्या आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, एट दैट टाइम यू आर ए स्टूडेंट, इट्स माय लेक्चर, बट आफ्टर सम टाइम फर्स्ट आईडीसी यू विल हियर that is the question. These are the aspect of particular professional ethics. The structure of moral action. Moral professional ethics या ethics is reflect to these 3 particular point. Number 1 as a individual, number 2 as a active plan, as a action, and number 3 as a constituency. The first point is reflect to your personality, your I concept कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा क्या टारगेट है एज ए पर्सन, एज ए PhD scholar. It is the first step, structure. Number 2, the plan, format, action, case study, and so on, action plan. And the third is the resultant of overall your first day to your last day program. मैंने लिखा है, इसको आप देख लीजिए। अब एज ए पर्सन क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मोटिव, कैरेक्टर्स और इंटेंशन ऑफ द पर्सन। एज ए पर्सन हमारा क्या रोल है प्रोफेशनल एथिक्स में? यू आर ए गुड टीचर, यू आर ए गुड स्कॉलर, बट यू आर ए गुड स्कॉलर इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस. You are a good scholar on the behalf of presentation, on the behalf of write-up, on the behalf of subject knowledge, on the behalf of X, Y, Z condition. So ये जो division हो रहा है, it is depends on your character. Your character. कि हम करने क्या आए हैं? एक सिंपल से स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? PhD scholar क्या characters क्या हैं? What do you mean by PhD scholar characters? PhD scholars के कैरेक्टर्स मालूम है आप लोगों को? What do you mean by? PhD पे कर रहा है ना पर? Should have a never. That means it is our second point. Your activeness, your involvement. और क्या है कैरेक्टर्स? एज ए PhD स्कॉलर हमारे कैरेक्टर्स, यस, ऑनेस्टी. व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी? ये स्पेसिफिक वर्ड है जिसको हम आइडेंटिफाई करें. व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी? यस. इस सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय थिंक एज ए पार्ट ऑफ इंडिविजुअल और एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी?
हम क्या सोचते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, इसका रोल क्या है, किस लेवल पे हम पब्लिश करेंगे। इंडियन जर्नल में पब्लिश होगा, वेस्टर्न जर्नल में पब्लिश होगा, स्कोपर में पब्लिश होगा, या केयर स्टेट में होगा, या हमारा काम क्या है। एंड इंटेंशन ऑफ द पर्सन मैटर डिसाइडिंग राइट एंड रॉन्ग, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डे से आप जब टॉपिक चूज करेंगे, इट्स ए बेसिक प्रॉब्लम कि क्या टॉपिक में कैसे करना। नो नो नॉट, टॉपिक इज ए वेरी 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 स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर कंटेंट। कंटेंट को पकड़ लीजिए कि मुझे करना क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय माय, मैं क्या सोचता हूँ अपने कंटेंट को करने के लिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉपिक फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेशन ऑफ द टॉपिक इज द फर्स्ट स्टेप इन योर रिसर्च वर्क। अब इसके लिए हमें क्या होना होगा, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब कैरेक्टर में क्या स्ट्रॉन्ग करना है, कैरेक्टर क्या स्ट्रॉन्ग करते लिए हमें आना है कि आई एम स्टूडेंट as a role of scholar, as a role of student, then go to your library. Steps है, मुझे समझना है कि मैं स्कॉलर हूँ, मैं पीएचडी का हाथ हूँ, बच्चा हूँ, मुझे क्या करना है, go to library. Go to your overall scenario, overall society aspect, overall society problem, उस पे जाइए। Then after all, decide the domain, क्या हमें किस एरिया में काम करना है, उस एरिया के लिए नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज कलेक्ट करना है। Then formulate the topic. अब टॉपिक फॉर्मुलेट होगा, उसके बाद then we will start the process, review literature and so on, जो भी आपका अपना नेचर आता है उस तरह से। बट द कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें समझना चाहिए कि पहले हम हैं क्या। हमारी फीलिंग्स, हम तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। नो नो नॉट एट ऑल, यू आर ए सिंपल एंड सिंपल रिसर्च स्कॉलर, इनफ। अगर आपकी फीलिंग्स आ रही है कि आई एम ए रिसर्च स्कॉलर, तो दैट इज इनफ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। स्कॉलर्स के बाद एज पर योर एक्सपर्टीज ऑफ योर स्टूडेंट क्या होती है, ये रेगुलर आइए, काम कीजिए, टॉपिक्स पे जाइए, प्रेजेंटेशन कीजिए, एंड तो प्रोफेशनल इज बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिनेरियो में। इसीलिए उन्होंने कैरेक्टर्स की बात करी है, इंटेंशन की बात करी। देन सेकंड इज एक्शन प्लान, व्हाट मेक्स एन एक्टिव या एक्शन मॉरलिटी है, कि हमें करना क्या है। शुड द मोटिव या कैरेक्टर या इंटेंशन ऑफ एक्टर एज ए रोल ऑफ कंसिडरेशन, जो चीज आपकी एक्सेप्ट हो रही है थीसिस के लिए, फॉर्मुलेशन के लिए, टॉपिक के लिए, हमें उसमें एक्शन प्लान कैसे बनाना है। एंड द थर्ड इज our work, our recommendation, our views are more important for our individual या for our society. अगर ये कुछ निकल के आता है तो हमारी मॉरलिटी कम होनी चाहिए। अदरवाइज इट्स a big question mark of your work. The big question mark is the last statement, but it is related to your first statement, the formulation of the topic. That is the from first day to last day, formulation of the topic and submission of the thesis. In this area, 5 and 4 years, overall aspect, it is reflect to your professional ethics, कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, इसकी बात क्लियर। जरूरत क्यों है हमें एक काम इथिक्स को करने के लिए? Why ethics for work? Why ethics for PhD work? Why ethics for professional aspect? क्या जरूरत है? नंबर 1, बेसिक्स फॉर वैल्यूज हैं, विजन है। नंबर 2, अपने एरियाज को आपके आफ्टर ऑल जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, गुड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर एरियाज, आप कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं। नंबर 3, ओवरऑल चेक ऑफ योर प्लान कि किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमें काम नहीं करना है। अरिस्टो ने बात कही है, ये टोटल में सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट
किस तरह से हम कर रहे हैं, किस तरह से हम आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे देख रहे हैं, हमारा एंडिंग प्रोसेस क्या है, हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लास्ट पॉइंट में टू नॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय योर रिकमेंडेशन, लास्ट में पूछा जाता है तो आपने काम किया 5 साल, क्या किया, हम साइलेंट हैं, बिग क्वेश्चन मार्क, आपके पीछे तो क्वेश्चन मार्क, दैट इज द थिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ योर नॉलेज। फॉर्म ऑफ एथिक्स के क्या है, मेटा में जो बात होती है व्हाट इज गुड, नॉर्मेटिव में जो बात हो रही है व्हाट शुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं। थर्ड अप्लाइड इथिक्स की बात होती है, व्हाट डू वी अप्लाई इथिक्स एज पर आवर सब्जेक्ट, एंड द थर्ड फोर्थ इज मॉरल साइकोलॉजी, द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। हम ब्रेन से तैयार हो, हमें एक्शन प्लान में आना है कि हमें क्या काम करना है, उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू एंड फील्ड वर्क की तरफ मूव करें। ये प्रोफेशनल इथिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले तो मेटा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेटा मीन्स फॉर्मुलेशन ऑफ द टॉपिक को फॉर्मुलेट करना है, सबसे पहले मेटा स्ट्रॉन्ग है। Metaphysics is referred to some specific topic, some specific neutron, proton, electron, some specific substance and so on. That is the concept of metaphysics. It's called metaphysics के नाम से बोला। ये मेटा पे स्ट्रॉन्ग होना, हमें करना क्या है, व्हाट डू मीन बाय थिंग, कि मुझे क्या करना है। क्या बेनिफिट्स हैं। आफ्टर ऑल फाइनल रिकमेंडेशन इज योर थीसिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी रिकमेंडेबल। क्या निकल के आएगा, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी आ रही है। न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, लॉ बाद में आ रहा है, पहले न्यूटन्स आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात होती है, आर्किमिडीज लॉ, लॉ बाद में आ रहा है, पहले आर्किमिडीज एक इंस्टीट्यूशन, एक बंदे का नाम आ रहा है कि कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। आपका थीसिस आपके इंस्टीट्यूट आपको तैयार कर रहा है, आपकी थीसिस आपको रिकमेंड कर रही है कि डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, नॉलेज ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, वर्च्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। जैसे ही आपका वर्क ओवरऑल सिनेरियो एक्सेप्ट होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटी कम हो रही है, बढ़ रही है, अपग्रेड हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रॉन्ग हो रही है, जस्टिफाई करना है आपको अपने काम। देन सोशल प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है तो नो डाउट सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन बढ़ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। बट आफ्टर ऑल यू आर ए गुड स्कॉलर, तो नो प्रॉब्लम। देन द थर्ड, लॉ, जस्टिस एंड ऑल। अब हमने जो काम किया उसके लिए कितना हम रिलायबल है, एज ए पार्ट ऑफ गुड जर्नी, यू आर ए गुड। और उसके बाद हम करेंगे क्या, दैट इज गुड। देन थर्ड, अल्टीमेट एम है कुछ दिए हुए, किस तरह से हम काम करेंगे। साइकोलॉजिकल फील्ड, actually philosophical aspect, without psychological it is impossible. Basically philosophy is based on our thoughts, जो चल रहा है दिमाग में वो philosophy है, but without paperwork, without behavior, without action plan, without case study, without ultimate activeness, it is possible कि हम अपने thoughts को prove करेंगे। तो without साइकोलॉजी इट इज इम्पॉसिबल कि हम फिलॉसफी को लेके चलेंगे, और विदाउट फिलॉसफी इट इज इम्पॉसिबल टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, साइकोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ थॉट, थिंकिंग प्रोसेस जो चल रहा है दिमाग में, किस बेस्ड ऑन फिलॉसफी का। बट आफ्टर ऑल इट इज एक्शन प्लान दैट इज रिफर्ड टू साइंस। जो दिमाग में चलता है, जो आइडिया आ रहा है, वो जो दर्शन है, वो फिलॉसफी, वो आप देख रहे हैं, वो चल रहा है। अभी आपको जो स्लाइड दिख रही है, ब्रेन में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आप रीड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। यहाँ जो आप लेक्चर चल रहा है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में जो लेक्चर चल रहा है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, ये सफिशिएंट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का प्रेजेंट करो, वो फर्स्ट क्वालिटी होगी और टॉपिक लिखे हो, उसके लिए एज ए पार्ट ऑफ या एज ए बोला form of the I am a student and the PhD scholar, no problem. But the problem is I am a student, I am a student, I am a student, people know what they call you that. पहले सोचिए कि मैं क्या हूँ, यहाँ ये आइडेंटिफिकेशन होगा तो नो प्रॉब्लम है।
कहाँ से डेवलप होती है और कहाँ से होती है एटीट्यूड और ईगो और हम लोग देखते हैं बहुत फेस करते हैं अपने जनरली प्रॉब्लम 12 साल 13 साल के कमा के आते हैं डेवलप करने में फायदा जहाँ हो वहाँ हो नो प्रॉब्लम बेटा आई एक्सेप्ट इट बट यू आर आवर टेरिटरी और ये फीलिंग से अगर स्टूडेंट डेवलप हो गई तो आपका चीज डेवलप हो गई क्योंकि जहाँ आपकी स्टूडेंट्स की पावर आई जहाँ पर आपने आई का कॉन्सेप्ट आया नहीं बी के कॉन्सेप्ट में चले वहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होगी वैसे आप नए स्टूडेंट हो up, down, yes, no, welcome, thank you, and so on. What? That's the body words. क्या करते हैं बच्चे भी सीखते हैं क्यों सीखते हैं बट द बेसिक सीखते प्योरिटी जो है 12 साल 15 साल 13 साल में वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाता इसको लेवल का स्टूडेंट बहुत प्रोफेशनल एंड सो ऑन तो वेल परफॉर्म होता है रुचि नहीं आता एंटर लेकर हो जाता है interdisciplinary program is not important question is I am it मेरा पूरा फोकस पूरे लेक्चर में I am it कि मैं क्या हूँ मैं तो स्कॉलर हूँ और मुझे स्कॉलर हूँ तो मुझे फर्स्ट टॉपिक अपना टॉपिक डिजाइन करना है फॉर्मुलेशन ऑफ द टॉपिक इसमें इज डन गो टू द लाइब्रेरी गो टू द रही मैं तो यहाँ बैठ के डिजाइन करूँगा बहुत सारा तो concept is related, is not your India aspect, it is related to your Ph.D. worldwide. दुनिया देखेगी जब दिखेंगे otherwise no. ये किस चीज को बता रहा है हम ये सोचें हमें PhD करना है हमें डॉक्टर लेना है कैसे सभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर नाम का बच्चे की वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन है तो ऐसा लॉर्ड और ऐसा यूनिवर्सिटी डेविड तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिला आपको यूनिवर्सिटी क्या करना क्या है आपको का नाम क्यों नहीं बोलती क्यों कहाँ से रिजल्ट आउट हो रहा है बच्चे नहीं करना है बट द प्रॉब्लम बट द इंडियन प्रॉब्लम इज कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं नंबर ऑफ एरियाज में वहाँ पे रिजल्ट ओवरऑल क्या है ओवरऑल क्या है क्या किस तरह से स्टडीज हो रही है बट प्रोफेशनल स्टेज पे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस सिनेरियो से देख रहे हैं Then my second topic is moral philosophy. Philosophy is clear? Philosophy is clear? Generally, PhD की फुल फॉर्म बच्चे नहीं बता पाते डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी और साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है वो लिटरेचर बेस्ड माना जाता है नो आप लोग सब फिलोसफी के बंदे हैं आपका एक विजन है योर विजन मिशन इज क्लियर दैट मीन्स यू आर ए फिलोसफर आपको मालूम है क्या करना है कैसे करना है कहाँ जाना है कितना अपना वर्क करना है ओवरऑल योर विजन मिशन इज क्लियर तो दैट मींस यू आर फिलोसफर और फिलोसफर होने के लिए कोई तीन चीज है मैंने बहुत बेसिक्स की बात करी ये पूरा जो स्ट्रीम है ओवरऑल द मीनिंग द कॉन्सेप्ट द बिहेवियर ऑफ एंड सो ऑन द मेन थीम इज मेटाफिजिक्स असिस्टेंट एग्जाम
एज ए एलिमेंट्री स्टेज आप देखते समझिए कि मेटा एपिस्टम रहेगा, इससे ज्यादा मत समझिए क्योंकि नंबर ऑफ स्पीड के स्टूडेंट्स अभी द मीनिंग ऑफ moral physics is also known as ethics, and it is the branch of philosophy which is referred to some specific questions: what, why and how. क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, what, why and how. The question is what, why and how. क्या, क्यों, कैसे. That is sufficient. It is related to the philosophical aspect. And after some time, to solve the problem, it is a psychological aspect. And after, with reference to ICT concept, with reference to historical concept, with reference to review concept, with reference to recommendation, formatting and so on, it is referred to the subject wise. इस एरिया में आपने मात्रा पूछ कर तो द मोर थिंग इज कि हम मॉरलिटी को कैसे लेके चल रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट विदाउट हाई कॉन्सेप्ट इट इज इम्पॉसिबल. व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपना सिनेरियो डेवलप करने के लिए जरूरी प्रोफेशनल. हम लोग सब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग एरियाज से हैं, अलग अलग कंटेंट के हैं. आपको अपने टारगेट्स हैं बात, तो टारगेट्स को फुलफिल हो रहा है वो फिजिक्स का पार्ट है. कैसे कौन यहाँ स्टडी कर रहा है वो डिपेंड्स ऑन योर फिलॉसफी. ये पहला सेंटेंस है, डिपेंड्स ऑन योर फिलॉसफी. और बिल्कुल एलिमेंट्री ग्राउंड पे बात करें, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी, डिपेंड्स ऑन योर लव ऑफ विजडम. जिस तरफ जाना चाह रहे हो उसमें अटैचमेंट है या नहीं है, तो जिस टॉपिक को आप ले रहे हैं वो आपके लिए, आप उसमें जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. अगर आप मूव कर रहे हैं तब आप प्रोफेशनल स्किल्स का पार्ट हो, अदरवाइज नो नथिंग. तो वो एक लिटरेचर तैयार हो रहा है, एक बुक तैयार हो रही है, एक कागज तैयार हो रहा है जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि आई एम गुड वर्ड. मैं तो प्लस ही बोलूँगा सॉरी कि मैं एक लेवल पे अच्छा लगा. Being a teacher, being a student, that is the concept of philosophical. क्या है वो जो हमारे आसपास है वो यहाँ जो मॉरल फिजिक्स की बात कर रहा है ये पेपर, कि फिलॉसफी में फिलॉसफी को मॉरल, इन्होंने फिलॉसफी की बात करी, उसके बाद मॉरल फिलॉसफी की बात की. जो आप करने आए काम, उसमें आपको सेल्फ इंटरेस्ट लेना है, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन लेना है, आपको जो कॉन्शियस लेवल है आपका वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है. जो कॉन्शियस लेवल अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल कि है या नहीं. आप लोग कॉन्सेप्ट चेंज कर मेरा मामला analytical से और कहीं ना कहीं आप सिस्टम आप इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप देखना शुरू होगा. बट पॉजिटिव नहीं, मेरा फ्रेंड नहीं है मतलब देखकर उसके लिए निगेटिव उसके लिए बहुत पॉजिटिव हमसे पॉजिटिव. Is it clear? Being a good teacher or being a subject-wise expertise, what do you mean? Your ideas के कैसे scope करेंगे? Formulation of the topic आपको formulate बनाना होगा. Paper 1. Your first RDC is related to your topic. Your second RDC is based on your chapter 2, your third RDC is based on your 5th chapter, next RDC is based on 4th chapter, next RDC is referred to your 5th chapter, and recommendation, then afterwards. अब इस सिनेरियो में ये टॉपिक ज्वाइन करूँ, आपकी पॉलिसी एजुकेशन मैनेजमेंट में डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई करें. डिसिप्लिन नोट आने की, इट इज
my views, that is my ethics, my privilege for this. ऐसा नहीं लिखेंगे, ये कहाँ आ गया? ये कहते हैं आपको today, ये कहाँ आ रहा है? ओवरऑल कैसा आ जाएगा? What do you mean by overall? Yes. किस में कहीं हम आइडेंटिफाई करेंगे? It is my philosophy. As a pharmacy student का डिफाइन करेगा कि it is my philosophy. लिखेगा? Yes, आप मेंशन करेंगे. आप लिखेंगे रिकमेंडेशंस. थीसिस के जो रिजल्ट्स होंगे, जो फाइंडिंग्स होंगी, that is your philosophy. और it is based on your previous work, previous last 5 year work, from first day work to last day submission work, जो भी आपका होगा, जो रिजल्ट होगा, it is a philosophy. क्योंकि philosophy अपने आप में आइडेंटिफाई कर रही है कि that is my good work, it's my good work. और वो आएगा कैसे? Morality से आएगा. Combination of different domains से मिलेगा, combination of different dimensions से मिलेगा. क्या होंगे वो dimensions? As a professional ethics, dimensions क्या होंगे professional ethics? No, not at all. कुछ तो होंगे. What do you mean by thesis format? किसी को मालूम है क्या है thesis format? क्या? Systematic. कंप्यूटर साइंस का कोई बताएगा मुझे? क्या बोलते हैं systematic प्लानिंग कंप्यूटर साइंस में? No, not a structure. As a form of programmer, क्या बोलेंगे? As go from first step, from second step, from third step, and so on. Without any step, the sequence is the most. It is a basic problem of your particular. The formulation of the topic, the objective, hypothesis, a relationship between, concept between, behavior terms, recommendation, statistical analysis, या जो भी आपका एज पर सब्जेक्ट वो ओवरऑल आपके भेजे में प्रेजेंटेशन है. एंड आफ्टर ऑल द फर्स्ट आरडीसी प्रेजेंटेशन एंड फाइनल आरडीसी प्रेजेंटेशन, योर प्रेजेंटेशन, योर ओवरऑल इनपुट इज मोस्ट जो आप प्रेजेंट वहां पर जो चीज निकल के आ रही है वो ये कॉन्सेप्ट आपको पार्ट ऑफ जर्नी है. इससे पार्ट ऑफ जर्नी जो आप वर्क कर रहे हैं थीसिस में हर जगह कॉपीराइट क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर एक्स को, प्रोफेसर वाई को, प्रोफेसर अदर यूनिवर्सिटीज, अदर कंट्रीज को जहाँ पर आप राइट डाउन कर रहे हैं वहाँ पर आप उसको एपीआई में शो कर रहे हैं, वहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोटेशन दे रहे हैं, उसके रेफरेंस में उनको कोट कर रहे हैं. दैट इज यू आर फ्री, बट विदाउट कोटिंग इट्स अ कॉपीराइट मैटर. जैसे आईपीआर मैटर जिसको आप बता रहे हैं कि थीसिस में लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप उसके वर्ड्स हैं, नो प्रॉब्लम मैटर. ऑन द बिहाफ ऑफ नॉलेज बेस इज नो प्रॉब्लम, बट ऑन द बिहाफ ऑफ योर वर्ड्स, that it is not your words, it's a big problem. क्योंकि ओवरऑल थीसिस तो कहाँ जाना है? शोधगंगा कहाँ है? वर्ल्ड वाइड फॉर्म में. जब कोई कैच करेगा, ऑब्जर्व करेगा और बिफोर स्टडी ऑलरेडी सबमिटेड है, आपका 70 आपका 30 में जाएगा. तो इन दिस ड्यूरेशन फर्दर पोजीशन में आप, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया. इस एथिक्स की बात करेंगे, ये इस पूरे पेपर में हम लोग इसी लेवल की बात करें. जैसे रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, तो पूरा यूजीसी का पेपर है और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज में यही चल रहा है. एथिक्स के बाद एथिक्स मोर इम्पोर्टेंट. डायमेंशंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, यस इट्स अ गुड क्वेश्चन. डायमेंशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने से किसी के बाद नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसे समझेंगे. इट मींस पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर, वेल नोन
परफॉर्मेंस फिक्स है, तो ये तो सही करना वही तो फिक्स है। जब कोर्स में वो फिक्स है, अब इस सोचने में करने में पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या क्या चीजें बात सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला ऑनेस्टी में पहले आ गया आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर। अगर ये आइडेंटिफाई करना तो ये प्रोफेशनल का फर्स्ट होगी मॉरल number two, as per your subject knowledge, as per your domain, as per your concern, number 2 point आगे काम कितना होना और honesty what is speaking as per your as per educational aspect, as per your vision and mission skills, जैसे जो पूरी करना क्या है, it's a vision and mission। जनरल बात करें it's a basic objective, objective तो होंगे हमारे घर में करना है, then after some specific action plan, some specific action plan, and after all, copyright, meaning of copyrights, meaning of IPR, meaning of interpersonal behavior, meaning of relationship between to your content and your previous teacher's content, या your past teacher's content, इसमें बात करते हैं, स्टडी हमने भी पढ़ा, एग्जाम करना है, रिकमेंडेशन में मिलेंगे हमारे को स्टूडेंट्स क्या करें, इनको रिलेशन आ रहा है, then pre and post that is good, as a justification, then overall your thesis, your recommendation are well known, established in overall scenario, so that is what is very strong, what strong, so this strong position what are, it is a part of beauty, it is a part of anthology, it is a part of valuable aspect. बहुत सारी चीजें कुछ नया नहीं है इसमें बात, आपको बात किया कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस और नॉन कॉन्शियस एक ईगो एंड सुपर ईगो, आइडिया, ideas are thinking from thought process. Ideas are the result of thinking. Therefore, that action is related to psychology. The action is referred to ICT concept, policy concept, engineering concept, education concept, management concept, community concept. It is related to specific criteria after recommendation. आज कहते हैं बहुत इजी नहीं है, but इजी का meaning can highly simple cost simple no problem at all, from first RDC every 6 month का गैप है आपका सीजन में, तो गैप में अगर आप 6 month में 4 and 5 month वर्क कर रहे हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर चैप्टर्स में आपका फ्रॉम फर्स्ट लास्ट आईडीसी और नेक्स्ट आईडीसी के बीच जो 6 मंथ 4 मंथ 5 मंथ का गैप है, इसमें आप इतना स्कॉलर सेमेस्टर काम करेंगे नो प्रॉब्लम है, उसमें आगे करोगे एक चीज पेपर यही तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं स्टूडेंट को मुझे काम करना है, मतलब 75% 85% अटेंडेंस आपको देना होगा, अटेंडेंस इसलिए कि फिजिकली है as a working capacity. Yes. ICT concept. मैं इस टाइम ऑनलाइन हूँ और जो मेरा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, काम चल रही है, कम्युनिकेशन है, वर्किंग ऑन जुड़ी प्रोसेस चल रही है। That is the IC. Form can you get it? Yes. IC full form of IC. Information communication.
The question is information communication technology. इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आप किसी लेवल पर टेक्नोलॉजी मान लीजिए, लाइट है, फैन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, दैट इज टेक्नोलॉजी। जो आपको सुनाई दे रहा है, जो वर्डिंग चल रही है, दैट इज कम्युनिकेशन है। और इस कम्युनिकेशन में है क्या, ड्रामा है, एक्टिंग है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड का नोन पर्सनालिटी नोट पे वो जो रोल प्ले कर रहा है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जस्ट अपोजिट कीजिए किधर हो, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो पहले तो टेक्नोलॉजी आ गई, फिर इंफॉर्मेशन आ गई, वो फिर कम्युनिकेशन आ गया, देन इंफॉर्मेशन, दैट इज रिलेटेड टू आईसी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और तो बहुत छोटी बात हो गई, आईसीटी तो खत्म हो गया। पहले हम लोग ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करते थे, चाप दफ्तर के थ्रू टीचिंग होती, टीचिंग ऑफ चाप दफ्तर, ट्रेडिशनल टीचिंग, देन आफ्टर ऑल स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट क्लासेस। और आज क्या चल रहा है, चैट जीपीटी, और देन आफ्टर ऑल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Yes. It's not smart. वही कॉन्सेप्ट है कि जब हम क्लास में पढ़ते थे, और कुछ भी अभी भी मैं आपसे कहूँ कि मीनिंग ऑफ आईसीटी लिखिए, और एक स्टूडेंट, बी स्टूडेंट भी होगा, स्टूडेंट देखा और वहां क्या है जनरली, जब हम इस सेट पे मीनिंग ऑफ फिलॉसफी वर्ड डालेंगे, तो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी पे जो हम रीड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज आवर कॉन्सेप्ट, आवर व्यू। बट आफ्टर 5 मिनट्स फिर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी आ जाए। थोड़ी देर बाद जब हम कुछ और देख रहे होंगे, हम मीनिंग ऑफ फिलॉसफी से बाहर निकल चुके हैं, बट आफ्टर सम टाइम मीनिंग ऑफ फिलॉसफी फिर आ जाए, देन आफ्टर सम टाइम मीनिंग ऑफ फिलॉसफी तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जब आपके मोबाइल में नंबर ऑफ टाइम आपने इस चीज को सर्च करा और नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज इट। इसमें आपको पकड़ लिया कि आपका मेंटल लेवल क्या है। रीजन आपको नीड नहीं है, आप रिक्वायर्ड नहीं है, आपको फिर नहीं करना, आप नहीं रहा है, बट आपको सम टाइम रिपीट अगेन एंड अगेन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन हो गया। तो फंक्शनिंग फॉर्म जितना भी आप कर रहे हैं, जितना भी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, और ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क, कैसे हम फॉलो कर, व्हाट डू मीन बाय एआई स्ट्रांग बाय, बट आफ्टर ऑल एंड बिफोर, professional ethics and morality is more important in overall sense. Next point, meaning of moral philosophy, study of some specific principles, values, concept of relationship between the relation of moral. क्या है morality? फिर वही वाली बात, आपको पता है ऑलरेडी अबाउट दिस। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, द एल्गोरिथम, द सिंटैक्स इज रिफ्लेक्ट टू योर आइडियाज, योर बिहेवियर, योर प्रेजेंटेशन, दैट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल। कैसे करना है काम। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं क्लास में, मैथ्स में आप लोग ने ऑब्जर्व करा होगा, लेफ्ट राइट को जब हम लोग इक्वल करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट में आते हैं, कुछ स्मार्टनेस के साथ राइट लेके चलते हैं, लेफ्ट पे चले आते हैं।
देखा है? It is depends on your content कि simple to complex teaching, simple to complex aspect या complex to simple aspect. प्रॉब्लम बड़ी सी ले ली, अब प्रॉब्लम में आ सॉल्व नहीं हो. सिंपल प्रॉब्लम ली, उसको आइडेंटिफाई करा, टूल बनाया, मेडिसिन बनाया, तो इक्विपमेंट बनाया और उसको पब्लिश कराया. दैट इज सफिशिएंट. इसीलिए नहीं कहा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे आप एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा लीजिए जिसका वेट 4 और 5 के लिए. नो नो नॉट एट ऑल. सिंपल सा लीजिए, नीडी टॉपिक लीजिए जो सोसाइटी को नीड है, उसके ऊपर वर्क कीजिए और पब्लिश कराइए. इसका गुड रिजल्ट. इसीलिए द टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्या लेने जा रहे हैं, सिनेरियो के बाद आपको टॉपिक ही चूज करना है. टॉपिक क्या है, क्या नहीं है, या मैं लास्ट लेक्चर्स में बात. प्रिंसिपल्स ऑफ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स वही नेक्स्ट 5 ईयर हमें कैसे पॉइंट आउट करना है अपनी थीसिस. सेकंड पॉइंट है इवैल्यूएट होगा, उसके बाद वो एक्शन में आएगा, फिर एज ए ह्यूमन बिहेवियर, वो पॉलिसी, वो सिस्टम, वो पीएचडी वर्क एक पब्लिकेशन की तरफ चला जाएगा और वो पब्लिश होकर आपके सामने होगा एक एज ए फॉर्म ऑफ पीएचडी वर्क. दैट इज द सिनेरियो ऑफ. कुछ स्पेसिफिक फिर इसमें मीनिंग्स हैं कि किस तरह से हम मॉरल फिलॉसफी को डिजाइन करते हैं. नॉर्मेटिव इफेक्टिव्स हैं, मेटास्टिक्स हैं, अप्लाइड है, सोसाइटी में हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं. मॉरल साइकोलॉजी है, किस बिहाफ पे हम कॉपी को कॉपी राइट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको हम अपनी रिकमेंडेशंस में दे रहे हैं. एपीआई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपना, तो वहां पर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम एपीआई स्टाइल में कैसे लिख के दे रहे हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ मॉरल साइकोलॉजी. उस रेफरेंस से बात होगी. इसी में एपिस्टेमोलॉजी की बात आ जाती है, क्योंकि फिलॉसफी है तो नो डाउट एपिस्टेमोलॉजी तो इन्वॉल्व है. एपिस्टेमोलॉजी इज बेस्ड ऑन नॉलेज, मेटाफिजिक्स इज बेस्ड ऑन थॉट, और एक्सोलॉजी इज बेस्ड ऑन कंटेंट वैल्यूज या ब्यूटी जिसको हम बोलते हैं. एंड ओवरऑल द सिनेरियो ऑफ दिस पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर. जिस क्वेश्चंस को आप नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट एंड नंबर 3 पॉइंट, these are the relationship between your first day behavior to your final day or your final viva behavior, your final literature. Is it possible कि ये इतना बड़ा काम किसी को नहीं होगा? Yes. Being a good scholar, being a good listener, no problem. But you feel first of all कि I am a researcher. यहाँ आपको फीलिंग्स आएंगी तो नो प्रॉब्लम है. इट्स माय पर्सनल कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह से इसको देखते हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारा स्टेप इज द ऑफ. नाउ नेक्स्ट लेक्चर इज नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट एंड रिएक्शन. कल बात करेंगे मॉरल जजमेंट एंड रिएक्शन. इज इट क्लियर? एनी क्वेरीज? व्हाई क्वेरीज नहीं आना तो प्रॉब्लमेटिक है. 100% कंटेंट पता है, 0 10 अदरवाइज 0. इज इट क्लियर? सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर किस तरह से मॉरल फिलॉसफी इंकरेज कर रही है आपके ओवरऑल रिफ्लेक्शन को. इट इज डिपेंड्स ऑन ओवरऑल व्यू. यस, relationship between philosophy and psychology. Without philosophy, it is impossible to move your idol. Yes and no. इसका सोचोगे नहीं जाएगी ना. Philosophy is सबसे पहले बोला, philosophy is the concept of your thought. फिर मुझे PhD करना है, मुझमें एक टॉपिक लेना है, it's my topic. So that is your philosophy. And start your procedure.
Psychology is the human behavior. And philosophy is the basic concept of your views, your thought, your thinking thought. आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा है जो, वो फिलॉसफी है. इसलिए बोला जाता है इट कैन हैव पर्सन का फिलोसफर. हर बंदा जो ह्यूमन बीइंग है, उसका बिहेवियर जो चल रहा है, आप मुझे देखा है ये भी फिलॉसफी. आप कंटेंट रीड करो, ये क्या चीज करो, बट आपका बैठना, आपका यहाँ पर आना, एज ए फॉर्म ऑफ स्टूडेंट एक्सेप्ट करना, ये क्लासिकल एस्पेक्ट है. बट प्रेजेंट फिजिकली जो है हो रहा है, तो दैट इज द यस. ठीक. प्रैक्टिकली काम कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम एज ए रोल ऑफ टीचर, एज ए रोल ऑफ प्रेसिडेंट, हमारा क्या नीड होगी, हमारी क्या रिक्वायरमेंट. एज ए फॉर्म ऑफ टीचर इट इज पॉसिबल कि आपसे कोई सब्स्टिट्यूट आया, टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट है, फादर का कोई सब्स्टिट्यूट है, फादर का कोई सब्स्टिट्यूट है, जो मदर हो जाए उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, फादर हो जाए उसका कोई सब्स्टिट्यूट है. अगर नो 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 बोलते हैं तो नॉलेज का भी कोई सब्स्टिट्यूट. फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अब ऑन कीजिए चैट जीपीटी, मीनिंग ऑफ क्लास मेंशन कीजिए, नो प्रॉब्लम. सेकंड फर्स्ट टाइम पर पेज पर पेज आपको बार बार रिपीट होगा और अपने अपनी लैंग्वेज में आएगा, अपनी अपनी पैटर्न चेंज होता रहेगा, क्लियर होगी. बट एज पर ए टीचर या एज पर ए प्रोफेसर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इज इट करेक्ट या इट इज रॉन्ग. द करेक्ट एंड रॉन्ग वर्ड इज रिलेटेड टू योर मॉरल. ऐसा का यूज होता है, यूज करते हैं, राइट एंड रॉन्ग. एआई जो आ रहा है वो एआई का वेलकम करिए. आपको ओवरऑल नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ओवरऑल नया सॉल्यूशन, बट हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमको अपनी लाइफ में कैसे स्टाइल करना है अपनी पार्ट को. मैंने बोला नहीं कि जब आप विजडम करेंगे उसी पे तो आप क्यूरियोसिटी में जाएंगे, उसी पे तो आप गैप वाली में जाएंगे. और आपको पता नहीं है कि मुझे पीएचडी का मीनिंग क्या है और मुझे करना क्या है, माय विजन एंड मिशन इज नॉट क्लियर. किस पे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ काफी का पीएचडी का किस पे रिकमेंडेशन फाइनल वाले में आप पूछना ही क्या पाओगे. क्वेश्चन मार्क क्या होना आइडिया कैसे जियो सिस्टम में क्या मोबाइल आपके पास में, मोबाइल आपके पास कोई दिखा देगा ना देखना क्या भी देखना कौन डिजाइन करेगा, नहीं करेंगे, पापा करेंगे, बेटा करेंगे, कौन करेगा. मैं किस प्रोफेशन में हूँ ये भी मुझे आइडेंटिफाई करें.
लोगों को हमें भी मिलेंगे कि कम्युनिटी लाइफ में मिलेंगे लोग एक और स्ट्रॉन्ग मिलेंगे आपको सब टाइम एआई की बात आ रहा है एआई कम्युनिकेशन एआई जनरेट मैंने अभी देखा है लाइफ में एआई मैं जो देख रहा हूँ तो पूरा एक सिस्टम पे मिलेगा कि आप देख सकते हैं कि पूरी सामने तो हमने में क्या लॉस तो ये रिजल्ट कॉपीराइट का पार्ट है मेरे व्हाट्सएप को मैं चेक कर सकता हूँ तो मैं आपसे नहीं मेरे यूट्यूब को मैं चेक कर सकता हूँ लेकिन एआई ने एक ऑप्शन क्रिएट कर रहा है मिलेगा आप लोगों को कि आपने क्या कुल मन क्या देखा क्या नहीं देखा वो पब्लिश कर रहा है ये आ जाएगा अभी तक तो ये मेरे ख्याल से साइलेंट स्टेज में है पब्लिश की तरफ नहीं पब्लिश होने का पब्लिश कैसे होगा पब्लिश किस तरह से होगा कि ओवरऑल इस जोन में इस एरिया में इस यूनिवर्सिटी में इस कैंपस में कितने लोगों ने ये चीज इतनी बार देखी वो पब्लिश हो गया कॉपीराइट की बात आपको जस्टिफाई करना मेरा सबसे इस पूरे लेक्चर में बस एक दो चीजें आपने आइडेंटिफाई करी तो नो प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं क्या मैं किस प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन मुझे मालूम और मैं चाह रहा हूँ कि मैं गुड प्रोफेशन गुड टीचर गुड प्रोफेसर आइडियल शुरू बेस्ट आइडियल हूँ आपकी नॉलेज आपके कंटेंट आपके बिहेवियर आपके हाई कॉन्सेप्ट से आप करना उसके लिए ये एक वो पॉजिटिव है चैट जीपीटी पॉजिटिव है जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में जब ये चीजें आई थी वो प्रॉब्लम एट ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम लोग देखते थे 2005 में आसपास बहुत सारा सिनेरियो हम लोगों को मिलता था कि किस तरह से क्या है रीड करते थे साइबर कैफे में जाते थे तो हमें समझ में आता था आज क्या है आपका सुपरवाइजर आपके सर आपके मैम आपसे कहेंगे जिसको भी आप कोड कर रहे हैं आप मेंशन कीजिए किसी मेंशन नहीं करेंगे कि आपने इथिक्स पे क्वेश्चन मार्क आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ से कॉपी किया नो प्रॉब्लम आपका पॉजिटिव इथिक्स है बट आपने किसी को कॉपी किया ना मेंशन नहीं तो ये इथिक्स का पार्ट नहीं है ये मॉरल फिलॉसफी का पार्ट नहीं ये मॉरल इथिक्स का पार्ट है और वहीं पर एक क्वेश्चन क्लियर तो पहली क्वेश्चन एनी क्वेश्चन ओके थैंक यू वेरी मच सिग्नेचर होगा सर Thank you very much. Okay, all right.